Dear students, welcome to the world of DNA, the double helix that encodes the instructions for building and maintaining all living organisms. Dear aspirants, in today's video, we will learn about the structure of DNA. Okay, तो आज के वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? Number one, we'll be learning or talking about the structure of DNA. Okay, and also the characters of A, B, and Z form of DNA, which is again very important from your exam perspective. Okay, so whether you're appearing for CSIR net, okay, or CSIR DBT net, okay, or ICAR net, ICMR net, this particular topic is something which is very common. And also if you're preparing for assistant professor exams, okay, or any exam that is associated or related to the life science stream, then this topic is something which is very crucial and very important. Okay, all right, so we will be starting this particular video with the basic things that we must know before we proceed to the different types of DNA. Okay, all right, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले आई बिलीव यू पीपल आर एबल टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. आई होप आप देख पा रहे होंगे, राइट? सो दिस इज समथिंग दैट मैम वी ऑलरेडी नो, राइट? हमें स्ट्रक्चर ऑलरेडी पता है. यस, डेफिनेटली वी ऑलरेडी नो द स्ट्रक्चर, बट देर आर सम बेसिक stuff that we still need to know and memorize. ठीक है, बहुत छोटी छोटी सी चीजें हमसे एग्जामिनर इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछ लेते हैं एंड वी गेट कंफ्यूज. ठीक है, ऑलराइट. नाउ कंफ्यूजन किस में होती है? ठीक है, कंफ्यूजन हो जाती है एडेनिन और थाइमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, या साइटोसिन और ग्वानिन के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, या एडेनिन या थाइमिन के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स है. सो दीज आर ऑल सम वेरी बेसिक डिटेल्स दैट वी नीड टू लुक अपॉन. ठीक है, ये सारी चीजें ऑलरेडी आप अपने 11th ग्रेड 12th ग्रेड में पढ़ चुके हैं, राइट? देन वाई वी स्टिल नीड टू स्टडी इट? बिकॉज हमने वो टेक्निकलिटीज जहाँ पे हमको फोकस करना चाहिए था, हम नहीं कर पाए. ओके, ऑलराइट. सो एज आई ऑलरेडी मेंशन कि सबसे पहले वी विल बी डिस्कसिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. ठीक है, और उसके बाद वी विल बी प्रोसीडिंग फर्दर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए. Okay, all right. Now first of all, let us define DNA. What is DNA, right? The full form of DNA is deoxyribonucleic acid. Okay, all right. Now if we talk about this deoxyribonucleic acid, it is the hereditary material in humans and nearly all the organism. So number one note, please make a note of it, कि अगर आप डीएनए की बात करते हैं तो it is a deoxyribonucleic acid and it is the hereditary material in humans and nearly all other organisms. Okay, now remember how many strands are there in DNA? So there are 2 strands in DNA. Okay, all right, and these 2 strands only, they form the double helix structure. Okay, now if we talk about each strand of DNA, it is made up of a repeating unit and that particular repeating unit is what we call as nucleotide. ठीक है, all right. तो अगर हम DNA के बारे में बात करते हैं ना, so one thing which is very important कि DNA में repeating units होती हैं. Okay, और यही जो repeating units हैं, इनको हम क्या कहते हैं? वी कॉल देम एज न्यूक्लियोटाइड. ठीक है, तो फर्स्टली वी शुड नो कि देखिए 2 स्ट्रैंड है डीएनए में. ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट दिस, ये आपका स्ट्रैंड 1 हो गया. ठीक है, और ये आपका स्ट्रैंड 2 हो गया. तो हाउ मेनी स्ट्रैंड्स आर देयर? 2 स्ट्रैंड्स है. इट इज वेरी क्लियर टू अस. ओके, नाउ ये जो दोनों दोनों ही स्ट्रैंड है, ये कुछ रिपीटिंग यूनिट्स से बने हैं. ठीक है, एंड दोस पर्टिकुलर रिपीटिंग यूनिट, जो रिपीटिंग यूनिट्स हैं, उनको हम क्या कहते हैं? वी कॉल देम एज न्यूक्लियोटाइड्स. ओके, इसे आपको याद रखना है. ठीक है, तो ये जो रिपीटिंग यूनिट्स हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. ठीक है, ऑलराइट. तो अभी तक हमको पता चल गया डीएनए में 2 स्ट्रैंड्स हैं. ओके, और ये जो इंडिविजुअल स्ट्रैंड्स हैं, उनमें हमें रिपीटिंग यूनिट्स देखने के लिए मिलते हैं, जिनको हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं. ओके, ऑलराइट. नाउ इफ यू सी ओवर हियर, if we talk about the structure of DNA, it is very similar to a twisted ladder, right? It is appears जैसे एक ladder रखा है, but वो ladder twisted है. Okay, so this is the best way to learn this. ठीक है, तो DNA you can memorize the structure. Okay, with the example of the twisted ladder. अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि एक twisted ladder सा कुछ रखा हुआ है, right? Okay, now let's proceed further. ठीक है, और अब हम बात करते हैं डिटेल्स की. Alright, so the very first thing that I want you to know from this is, if we talk about the strands, they are anti-parallel. Very important everyone. Okay, anti-parallel strands are there. So we have discussed कि ठीक है 2 strands है, ठीक है, जो न्यूक्लियोटाइड से बने. एंड न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? सॉरी, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं एंड देन वील मूव टू द एंटी पैरेलल पार्ट. ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिए कि डीएनए जो है, डीएनए इज अ हेलिकल स्ट्रक्चर, इट्स अ डबल हेलिक्स. ओके, एंड देन द केसेस की हर स्ट्रैंड में हमें कुछ रिपीटिंग यूनिट देखने के लिए मिलते हैं, जिनको हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं. ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड, अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड के बारे में बात करें,
इट हैज थ्री कंपोनेंट्स, ठीक है। कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे मैम? नंबर वन, एक फॉस्फेट ग्रुप होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑलराइट, तो क्या क्या होने वाला है? नंबर वन विल बी अ फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। सबसे पहले तो हमको क्या देखने के लिए मिलेगा? विल सी अ फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, ये नंबर वन हो गया। ऑलराइट, व्हाट नेक्स्ट मैम? तो सबसे पहला फॉस्फेट ग्रुप, नंबर टू द शुगर मॉलिक्यूल, ठीक है। सो इट इज डीऑक्सीराइबोज शुगर हियर इफ वी टॉक अबाउट डीएनए, and in RNA it is a ribose sugar, ठीक है। And then the third component is the nitrogenous base, ओके। थर्ड कंपोनेंट क्या है? नाइट्रोजनस बेस है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? लेट्स क्विकली रिपीट इट। हमने देखा दैट इफ वी टॉक अबाउट डीएनए, तो डीएनए इज अ डबल हेलिक्स मॉलिक्यूल। नाउ इफ वी टॉक अबाउट डीएनए, उसके हर एक हेलिक्स में अगर हम इंडिविजुअल स्ट्रैंड के बारे में बात करें, तो उसमें एक रिपीटिंग यूनिट होता है, एंड दैट पर्टिकुलर रिपीटिंग यूनिट इज व्हाट वी कॉल एज न्यूक्लियोटाइड, ओके। नाउ उस न्यूक्लियोटाइड में तीन कंपोनेंट्स होंगे, एक आपका फॉस्फेट ग्रुप, दूसरा शुगर मॉलिक्यूल, एंड तीसरा द नाइट्रोजनस बेस। आर वी वेरी वेरी क्लियर टिल नाउ? Okay, all right, so if we are clear, then it's time for us to move forward, okay. Now as you can clearly see over here that it is mentioned that the strands are anti-parallel, okay. Now ma'am, what do we mean when we say anti-parallel? क्या मतलब होता है इस anti-parallel का कि जो strands हैं वो anti-parallel है, right? So the meaning of anti-parallel is that they are running in opposite directions. कैसे चल रहे हैं? Opposite direction में चल रहे हैं, ठीक है, all right. So if we talk about one strand, ये कहाँ से कहाँ move कर रहा है भाई? It is moving from 5 dash to 3 dash n, okay, and the other is moving from 3 dash to 5 dash n, ठीक है। तो number one thing is that these strands are anti-parallel. Please try to know this word. This is actually a keyword if you are going to define the structure of DNA, कि strands are anti-parallel, मतलब they are running in opposite direction. One is from 5 dash to 3 and the other is 3 dash to 5 dash n, okay, all right. Now why this anti-parallel orientation is crucial? It is important for the accurate replication and function of DNA. Please have a note of it. Again, very very important part, okay. Now let's proceed further and let's talk about the sugar phosphate bone, okay. All right, so if we talk about these strands which are there, हमने देख लिया कि सबसे पहले तो ये एंटी पैरेलल है, ठीक है। और राइट, अब एक बात और जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जान लेनी जरूरी है कि अगर हम हर एक स्ट्रैंड के बारे में बात करें, तो इसमें क्या है ना, एक ऑल्टरनेटिंग डीऑक्सीराइबोज शुगर और फॉस्फेट का ग्रुप है, ठीक है। और इस ग्रुप को कनेक्ट कौन कर रहा है? इस ग्रुप को कनेक्ट करता है आपका फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। समझ आया आपको? तो अगर हम दोनों स्ट्रैंड के बारे में बात करें, तो हमको क्या मिलेगा? हमको ऑल्टरनेटिंग डीऑक्सीराइबोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप मिलेगा। और ये डीऑक्सीराइबोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप को कनेक्ट किसने किया हुआ है? दे आर कनेक्टेड बाय फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो दे ऑफन आस्क द नेम ऑफ द बॉन्ड बाय व्हिच द राइबो डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप्स आर कनेक्टेड, सो दैट पर्टिकुलर बॉन्ड इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो हर एक स्ट्रैंड जो है उसमें ऑल्टरनेटिंग शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप है जो कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से कनेक्टेड है, ओके। एंड ये बनाते हैं शुगर फॉस्फेट बैकबोन, ठीक है। तो ये जो डीऑक्सीराइबो शुगर और फॉस्फेट ग्रुप का कनेक्शन है विद फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, इसको ही हम कहते हैं शुगर फॉस्फेट बैकबोन, ओके। एंड मैम ये बैकबोन क्या क्यों इंपॉर्टेंट है? सो सिमिलर फंक्शन, जैसे कि हमारी बॉडी में बैकबोन का फंक्शन है टू प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर भी डीएनए के पास भी उस बैकबोन, जो हमारा शुगर फॉस्फेट बैकबोन है, उसका क्या फंक्शन है? टू प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड इट इज ऑल्सो गोइंग टू प्रोटेक्ट द जेनेटिक कोड, ठीक है। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी आई बिलीव। नाउ लेट्स मूव टू द बेस पेयरिंग, ठीक है। तो आपको एक बात अभी मैंने बताई थी कि हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस भी होते हैं, राइट। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द 4 नाइट्रोजनस बेसिस। कौन कौन से हैं? एडेनिन, थाइमिन, cytosine and guanine, okay, all right. Now do try to understand, there is one thing that I want you to know, okay, that adenine and guanine are purines, ठीक है। adenine और guanine जो है वो purine है, and then cytosine, thymine are pyrimidines, very very important, ठीक है। so I have made a trick for this, ठीक है, ताकि आपको ये हमेशा याद रहे, and the trick is Ag is always pure, okay. what is the trick? Ag is always प्योर, ओके। अभी देखिए, इफ यू लाइक इट टेक इट, इफ यू डोंट लाइक दिस ट्रिक देन ड्रॉप इट ओवर हियर, ठीक है। बट ये एक शॉर्ट मेमोनिक है आपको याद रखने के लिए कि अगर हम, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन दिस, है ना। जब आप एग्जाम में एग्जाम हॉल में होते हो, आप एग्जाम लिख रहे होते हो, राइट, तो उस समय आपको बहुत कंफ्यूजन हो जाता है दैट एडेनिन एक प्यूरिन है या साइटोसिन एक प्यूरिन है या थाइमिन, राइट। सो देयर इज अ ट्रिक, Ag इज ऑलवेज प्योर, मींस एडेनिन एंड गुआनिन आर what? Purines, okay, pure is for purine, okay,
Alright, and then the remaining two, they definitely are the pyrimidines. ठीक है, तो if you love this trick, take it. If you don't love it, drop it here itself. ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं. तो याद रखिएगा that adenine is always going to pair with, किसे pair होगा, द थाइमीन. ओके, तो याद रखिएगा देयर इज अ स्मॉल ट्रिक जो शायद आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, ATGC. ओके, सो एडेनिन इज गोइंग टू बी पेयर्ड विद थाइमीन. ठीक है, एंड देन साइटोसिन इज गोइंग टू बी पेयर्ड विद ग्वानिन. बट याद रखने वाली बात है that there are three friends between 80. Okay, now why we are talking about three friends, these three friends are actually, sorry, there are two friends between 80. So why we are talking about these two friends, because these are the two hydrogen bonds. ठीक है, तो याद रखिए एडेनिन और थाइमीन के बीच में जो दो बॉन्ड्स होते, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, देयर आर टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन एडेनिन एंड थाइमीन, एंड साइटोसिन एंड ग्वानिन के बीच में थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं. ये बात आपको याद रखनी है. ओके, तो अभी तक हमने जान लिया व्हाट इज एंटी पैरेलल स्ट्रैंड, देन वी हैव टॉक्ड अबाउट द शुगर फॉस्फेट बैकबोन, वी हैव टॉक्ड about the base pairing, and we have also talked about purines and pyrimidines in DNA. Okay, so adenine and guanine are, Ag is always purines, and thymine and cytosine are the pyrimidines. Remember, there are two friends between 80. Two friends means two hydrogen bonds. Okay, again a mnemonic. So adenine and thymine, they are bonded with two hydrogen bonds. Cytosine and guanine, they are bonded with three hydrogen bonds. ठीक है, all right. Now let's talk about the major and the minor grooves. ठीक है, तो the very first thing that you should know कि ये major groove और minor groove है क्या. Okay, all right. So see, do try to understand जो helical twists होते हैं ना DNA में, they actually create some regions. Okay, all right, जिनको हम major और minor groove कहते हैं. तो याद रखिए, the one which will be wider, okay, और protein binding के लिए ज्यादा accessible होएगा, उसको हम major groove कहेंगे, and जो narrower है उसको हम minor groove कहेंगे. Okay, so in the figure alongside also you can see this is major groove. ठीक है, और this region is less accessible and it is narrower, तो ये minor groove हो गया आपका. Okay, alright, so are we very clear? मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव. ठीक है, तो हमें ये याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है. मेजर ग्रूव कैसा होगा, वाइडर होगा एंड प्रोटीन बाइंडिंग के लिए ज्यादा एक्सेसिबल होएगा. माइनर ग्रूव जो होगा वो नैरोअर होगा, और इसमें डेफिनेटली नैरोअर है, एक्सेसिबिलिटी भी कम होगी. नाउ व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरेक्शंस विद द रेगुलेटरी प्रोटीन्स. जो रेगुलेटरी प्रोटीन्स है उनसे इंटरेक्शन के लिए हमें इन ये ग्रूव्स जो है वो बहुत एसेंशियल है. ओके, तो अभी तक वी हैव टॉक्ड अबाउट एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स, सुगर फॉस्फेट बॉन्ड बैकबोन, we have talked about base pairing in DNA, and we have also talked about major and minor groups. ठीक है, तो अब हम जल्दी से हेलिकल ट्विस्ट और डायमेंशन के बारे में बात कर लेते हैं. तो याद रखिए दैट अ कंप्लीट टर्न ऑफ द हेलिक्स स्पैन, अगर हम देखें एक कंप्लीट टर्न जो है हेलिक्स के स्पैन का, तो उसका एक कंप्लीट टर्न है जो हेलिक्स का, सॉरी, उसका स्पैन कितना होगा, इट विल बी 3.5 nm. ओके, all right, and कितने बेस पेयर होंगे, that is it will be 10 base pair. remember the general form of DNA is bDNA. ठीक है, तो bDNA में 10 बेस पेयर होते हैं, आप यहाँ से याद कर सकते हैं. if we talk about A and Z DNA, उनमें बेस पेयर का काउंट अलग अलग होता है. ठीक है, all right, so do try to understand that if we talk about the complete turn of the helix spans, it spans approximately 3.4 nm, and it contains about 10 base pairs. okay, remember, all right. so if you see over here, आप बहुत ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, एक एक कंप्लीट टर्न जो है हेलिक्स का वो 3.4 nm का है, और उसमें 10 बेस पेयर्स होते हैं. ओके, ऑलराइट, एक 3.4 का है एंड 10 बेस पेयर्स होते हैं. तो इफ वी टॉक अबाउट द ओवरऑल डायमीटर ऑफ द हेलिक्स, इट विल बी 2 nm. ओके, रिमेंबर दैट. ये याद रखने वाली बातें हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. okay, all right, now let's proceed further and let's talk about the stabilizing interactions in DNA. okay, all right, so do try to understand कि जो adjacent base pairs होते हैं DNA के, all right, तो ये क्या करते हैं ना, इनके बीच में हाइड्रोफोबिक स्टैकिंग इंट्रैक्शंस होते हैं. ठीक है, तो ये जो हाइड्रोफोबिक स्टैकिंग इंट्रैक्शंस होते हैं adjacent base pairs के बीच में, ये किसके लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, they contribute to the structural stability of the helix. okay, now in the coming video where we'll be talking about the detailed structure of DNA in bit more detail, this video is comparably shorter than the one that I am talking about right now. So in the coming videos we'll be talking about each and everything in very detail. ठीक है, अभी it is this video is majorly about ABZ form of DNA का comparison, but I just wanted to give you an insight. तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा introduction मैंने structure of DNA का दे दिया. okay, तो आपको याद रखना है कि जो हाइड्रोफोबिक स्टैकिंग होती है एडजेसेंट बेस पेयर्स के बीच में डीएनए में, तो उसी की वजह से आपको हेलिक्स की स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी नजर आती है. ओके,
एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम फॉस्फेट बैकबोन के बारे में बात करते हैं तो इसमें होता है एक नेगेटिव चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फॉस्फेट बैकबोन में होता है नेगेटिव चार्ज, और जो मैग्नीशियम आयंस हैं, ठीक है, ये मैग्नीशियम आयंस क्या करते हैं, ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं एंड ओवरऑल हेलिकल स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज कर देते हैं। ओके, सो दिस वाज अ जस्ट क्विक इंसाइट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स। ठीक है, we are going to focus more on the ABZ form of DNA today. Okay, that will be our major area of discussion in today's video. So as you can clearly see, these are the structures. Okay, A form, B form, and Z form. Okay, now remember one thing over here, that if we talk about A form and B form, okay, they are twisted in a right angle manner. Okay, all right, they are twisted right hand in the right handed manner. Okay, so again there's a trick, AB is always right. ठीक है, तो अगर आप ऐसे देखेंगे ए बी इज ऑलवेज राइट, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई देखो हमें याद रखना है कि ए और बी जो है दे आर ट्विस्टेड इन अ राइट हैंडेड मैनर, सो बचा एक जी फॉर्म, इट इज ट्विस्टेड इन द लेफ्ट हैंड मैनर। ठीक है, ये याद रखना है आपको। सो लेट्स ट्राई टू टॉक अबाउट ए बी एंड जी डीएनए। देखिए, इंस्टेड ऑफ राइटिंग बिग नोट्स फॉर दिस, आई हैव टेब्यूलेटेड द डेटा ओवर हियर, ताकि आपके सामने एक क्लियर पिक्चर हो ऑफ द कंपैरिजन बिटवीन ए बी एंड जी डीएनए। ओके, ऑलराइट, एंड एज यू कैन क्लियरली सी, आपको ए डीएनए, बी डीएनए और जी डीएनए में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो शायद कंफ्यूज कर जाए इफ यू आर गोइंग टू रीड अ पैराग्राफ अबाउट देम। ठीक है, इसीलिए टेबुलेटेड डेटा इज अ मस्ट, ताकि आपको क्लैरिटी हो कि एक्चुअल डिफरेंस क्या है इन तीनों फॉर्म्स में। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, द मोर जनरल फॉर्म इज बी डीएनए। नंबर वन, ये बहुत बेसिक चीज है बट कई बार हमसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है दैट हु हैज डिस्कवर्ड ए डीएनए, ओके, हु हैज आइडेंटिफाइड ए डीएनए फर्स्ट। ओके, सो वी जस्ट गो एंड टेक फॉर वाटसन एंड क्रिक बिकॉज वी ओनली नो एंड रिमेंबर दैट पर्टिकुलर नेम, राइट? सो डू ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड डू ट्राई टू make a note of it, that ADNA was first identified by Rosalind Franklin in the year 1953. Okay, BDNA by Watson and Crick in the same year, and ZDNA by Alexander Rich et al. In the year 1979. Okay, this is again very very important. Okay, the person who, the name of the people or the person or the individuals who have first identified A, B, and Z form of DNA. So A was identified by Rosalind Franklin, B was identified by Watson and Crick, and Z was identified by Alexander Rich et al. Okay, now if we talk about the shape of ADNA, ADNA is short and broad. Okay, and if we talk about BDNA, it is long. Okay, so ADNA, if you see ADNA, ADNA is short and broad, short and broad. BDNA is long and narrow. Okay, ADNA is short and broad, BDNA is long and narrow, and if we talk about ZDNA, it is slim and elongated. Have a note of it. Okay, so ADNA is short and broad, BDNA is long and narrow, and ZDNA is slim and elongated. Okay, all right, so A is short, B is long, and Z is slimmer. Okay, all right, and it is elongated as well. Now let's talk about the helix diameter. So the helix diameter for ADNA, make a note of it. Okay, make a table out of this. Okay, and you believe me, अगर आप इसे इस तरीके से tabulated data में पढ़ेंगे तो it will be very easy for you to understand also. ठीक है अभी, and differentiate also between the three forms. Now if we talk about the helix diameter for BDNA, it's 2 nm. Okay, and if we talk about ZDNA, it is इक्विवेलेंट टू अप्रोक्सीमेटली 1.8 nm. ओके, अभी अगर आप बेस पेयर्स पर टन के बारे में बात करते हैं तो ए जो है उसमें 11 बेस पेयर्स होंगे, बी में मैंने अभी आपको बताया इक्विवेलेंट टू 10 बेस पेयर्स, एंड इफ यू टॉक अबाउट जी डीएनए इट विल बी 12. ठीक है, तो देखिए इसको याद रख लीजिए आप, अगर इसको इसी ऑर्डर में याद रखेंगे ना ए बी जी, तो यू जस्ट नीड टू लर्न 11, 10 एंड 12. ठीक है, क्योंकि आपने याद ही रख किया है ना ऐसे ए बी जी, सो ए आपको पता है 11 होगा, बी आपको पता है 10 होगा, जी आपको पता है 12 होगा, सो यू जस्ट रिमेंबर 11, 10 एंड 12. Okay, A is 11, A has 11 base pairs per turn, B has 10, and Z has 12. Okay, now if we talk about the helix pitch, that is length per turn, it is 2.8 nm in ADNA, 3.4 nm in BDNA, and if we talk about ZDNA, it is equivalent to 4.5 nm. ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं. If we talk about the glycosidic bond angle, okay, so the conformation of DNA is anti. Okay, all right, the conformation of BDNA is again anti, and the conformation of ZDNA
the purines have the syn conformation and the pyrimidines have anti conformation. Okay, तो ये जो glycosidic bond angle का conformation है, okay, all right, it is coming from the specific values of bond angle. So ये जो conformation है ये again आपको याद रखना है, specifically for, if you are preparing for CSIR net part B में आपको ये वाला question जरूर देखने के लिए मिल सकता है. Okay, probable है. Why? बिकॉज सी इफ यू सी ए एंड बी तो यहाँ पे एंटी कॉन्फर्मेशन हमको देखने मिलता है, बट आप जी डीएनए के बारे में बात करेंगे तो ग्लाइकोजेडिक जो बॉन्ड एंगल है उसके प्यूरिन्स में सिन कॉन्फर्मेशन होता है और उसके पिरामिडीन्स में एंटी कॉन्फर्मेशन होता है. ओके, सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो. ऑलराइट, एंड इन केस you want me to talk more about these confirmation, please post that over the comment, okay, and I'll make a separate video. Now if we talk about the helix sense, as I've already mentioned, a DNA is twisted in a right-handed manner, bDNA right-handed manner, and zDNA in a left-handed manner. As I've already told you that there's a trick to remember this. A and B are always right, that they're twisted in a right-handed manner. Okay, and Z is in the left-handed manner. So I believe you've taken the screenshot of this. Now let's proceed further to some more characters of this A, B, and Z DNA. So if we talk about the major groups, the groups we have already talked about, right? So in A DNA, the major groups are narrow and deep, and in B DNA, they are wide and deep, and in Z DNA, they are flat or not distinct. Okay, so if someone is going to ask you a question that in which form of DNA the major grooves are not distinct or flat, the correct answer for this will be Z DNA. Okay, all right. Narrow and deep. See, narrow and deep, wide and deep, there is very thin line of difference between the features. Okay, so please try to have a note of this. If you talk about the minor grooves, in A DNA they are wide and shallow, okay, and in B DNA they are narrow and deep, and in Z DNA also they are narrow and deep. Okay, all right, so you can learn in this manner that in B DNA and Z DNA the minor grooves are narrow and deep, and if we talk about the A DNA, it is wide and shallow. Okay, now if we talk about the occurrence of all these forms of DNA, remember that the form A is rare. Okay, it is sometimes it is observed in RNA DNA hybrids or double stranded RNA, and B DNA is most common, as I've already mentioned. Okay, and then Z DNA is also rare. It is found in the regulatory regions or the during the supercoiling stress. Okay, so remember that B is the most common form of DNA. A and Z are rare. Okay, now if we talk about stability, because B is most common, it is more stable. Okay, or that is why it is commonly observed and found. So if we talk about BDNA, it is more stable, and if we talk about ADNA, so ADNA is lesser stable than BDNA, and ZDNA is least stable. So if someone is going to ask you that which form of DNA is least stable, what is going to be your answer? Your answer is going to be ZDNA. ZDNA is least stable. Okay, the most stable one BDNA, okay, intermediate ADNA, and least stable is ZDNA. Okay, all right everyone, so I believe that you've taken a screenshot of this table as well. Okay, I just wanted to summarize the different forms A, B, and Z. So this was my effort towards that. Okay. If you like it, for more such videos, stay connected. Keep watching PCS Pro, and do not forget to like, share, and subscribe. And yes, in case you want a detailed note of any of the topic of the syllabus from your CSIR net or from your MPPSC assistant professor preparation, right? You can definitely contact to the number given below, and you can definitely access the detailed PDFs as well. Okay, all right, so I hope you enjoyed today's video. Your suggestions are invited. You can definitely drop your feedback in the comment box, and I hope this video is going to be fruitful for you. So till the next time we meet, take care, keep hustling, and keep growing. Thank you for watching.